And the highly coveted Varanasi seat is becoming a major bone of contention within the BJP. After BJP top brass indicated that Modi will be contesting from that seat, reports emerging that senior party leader Murli Manohar Joshi was miffed over possibly losing this seat to Modi. But amid the chaos, the BJP is choosing to only downplay this rift, leading to even more suspense over Modi's seat. Supporters intensifying the campaign for Narendra Modi in Varanasi. On the other hand, another group of supporters from Murli Manohar Joshi's camp raising the pitch for their leader. The tussle for the safe Varanasi seat getting intense, with the internal wrangling within the BJP becoming more obvious with time. Amid speculations of Narendra Modi contesting from Murli Manohar Joshi's bastion, the senior leader choosing to downplay the apparent internal feud. 13 तारीख को संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें सब फैसले होंगे। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित होंगे और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फैसला होगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा पर भी कोई आघात हो या पार्टी की चुनाव जीतने की और ज़्यादा सीटें लाने की दृष्टि से भी कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो। But the top leadership of the party choosing to dodge the uncomfortable questions. Completely denying any differences within the party. बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं, अभी तो चर्चा ही नहीं हुई। जब यूपी की टिकटें आएंगी तब चर्चा होगी, अभी तो चर्चा ही नहीं हुई कहीं। सब कुछ कल जो छपा है वो बिल्कुल निराधार है। किसने ये दिया है, मैं तो खुद उस बैठक में थी, कोई चर्चा ही नहीं हुई इस पर। But despite BJP's attempts to downplay the issue, the underlying political tensions cannot be missed. The onus is now on the parliamentary board to take a final call. Bureau Report, Times Now.